So can anyone tell me what is what is report? Can anybody define and recap what we did in the last class? What is a report? What is a report? How it is, why it is important? What will you keep in mind when you're writing a report? How many types of reports are there? These are the questions I want you to answer right now. Yes? Somebody who has the camera on, speak into the microphone. What is Sikandar? What is the report? How will you define report? What is the report? This is the problems when you are not writing. I told you when you will not write, you will not be able to answer. How many of you have taken down the notes? Answer the question, define what is report. Yes. A report is a factual description of an issue or a problem or an event. What do you mean by factual description? Girls, what is factual description? What do you understand by the word factual? Exactly, ma'am. Not exactly. Something which Ma'am, is factual to the point, ma'am. Something reality, ma'am. Ma'am, factual to the What point. that happened reality. no, factual does not mean to the point. Factual means based on something which is real, facts. Yes, ma'am, real. Based on facts. When you write a report, you cannot write any imaginary. You cannot write any imaginary event. You cannot write anything which has not happened. Your report will be based on the facts, on reality, what happened. Like I told you to write a report on bridge class. You will not write anything which is not done in the bridge class. This is not any scientific essay or any descriptive essay or any narrative style of writing, but it will come under informative writing style. You are informing. So, and what are the types of reports you can write? What are the types of reports? Two types, ma'am. What are they? Formal, informal. Formal and informal? No. Three types, ma'am. Data. And there are report, three types of theory reports. report, basic report. What? 3 types. Yes. Reports can be accidental or reports can be planned. Basically, it can be categorized into 2 types. Otherwise, it can be classified into many. But basically, it is planned report. All the reports are either planned or either accidental. So it can be, when I ask you a question, what are the types of reports? Primarily, the reports are of 2 types. You have nothing to write. Will you remember all these things?
अब बताइए, what is report writing? I do not see you writing. I do not see you taking notes. You are just sitting. If you remain sitting, you will not be able to answer any question. So what did I say? The reports are primarily of two types. It can be planned or accidental. Yes, what is the planned report? What is the planned report? All of you were present in the last class and everything was dealt. बताया जा चुका था. Planned report क्या होता है? बताया ना मैंने. Say something. An event which already has taken place is the planned report. Write down the definition. Now, will I have to tell you to take down the notes also? A planned report is a report based on an event which already has taken place. This is planned. For example, it can be any function, any event, annual reports, progress report, medical reports. And the second type of report is accidental report, which is unplanned. You do not plan that to have an accident. Accidental reports, something which happens suddenly, event which takes place all of a sudden reports, accidental reports. And what is common in both the reports? Both the reports are based on facts. Both the reports are factual. Now the next question, are all reports written for the same audience or they have different audience, different reports for different audience? Okay. Answer the question, anybody who is online. Please give an example. There can be different reports for different audience. Explain this. Some reports are for specified readers, for experts. You know what is happening? You are only dependent on ma'am will send whatever she has taught. You are not writing anything down. That is why you are not progressing. And even if I send you on the WhatsApp, you are not reading. You have to take down notes from that. But something which you're not doing in the class, you will never do it at home. ये laziness नहीं चलेगा. You are just sitting, coming for your attendance, and that's it. 70% students have become very lazy. They're not doing any work. Let me see your report. Let me see your notes. What you have written. अपनी कॉपी दिखाइए आप. आपने राइटिंग स्किल में क्या क्या नोट्स बनाया, दिखाइए. शो इट टू मी. क्यों? मैंने आपके वर्कशॉप में इतने पीडीएफ भेजे थे कम्युनिकेशन स्किल्स के, कम्युनिकेटिव इंग्लिश के, टेंस के, पास्ट टेंस के, प्रेजेंट टेंस के. उसका कुछ आगे बढ़ा कि नहीं कि बस वैसे ही पड़ा हुआ है? ऐसे ही है.
तो खोल के देखा भी आप लोगों ने है कि नहीं? मैंने कहा था एक एक सेंटेंस सैम्पल सेंटेंस होता है एंड नेक्स्ट सेंटेंस आपको खुद बनाना होता है. आई वांट टू सी द होमवर्क. नहीं तो if you will not work, you will not improve. From today, I want to see all the work all the files which I have sent you. I want to see the homework, how much you have understood. You know, ये laziness नहीं काम चलेगा यहाँ पे. If you are lazy, काम नहीं करोगे, notes नहीं बनाओगे, तो फिर आने से फायदा क्या है? आपने कितने आइडिया बैंक लिखे? वो तो हमने पूछना ही छोड़ दिया था. How many of you have continued to write that idea bank, one topic every day? आपने कितना लिखा है? हाँ? क्या? 60 लिखा आपने? ओके, अब हमको दिखाइएगा. हाँ, कहाँ दिखाओ कॉपी. आज तो मेरा क्लास होता है तो आज कोई कॉपी लेके आना चाहिए था ना. लिखे हैं लेकिन कॉपी नहीं है. आई विल नॉट बिलीव यू. जब तक हम देखेंगे नहीं, आई विल नॉट बिलीव. This is an idea. This is a homework by default. You have to write a paragraph every day. Like if you want to improve, if you want to become your best friend, नहीं करना है तो बस यूं ही से करना है तो यूं ही से बने रहो. कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ अलग पहचान बनानी है अपनी, कुछ कर गुजरने का अगर जुनून अंदर में है तब तो आप कर रहे होगे. अगर ऐसे ही है लाइक एनी टॉम डिक एंड हैरी, सब लोग बीसीए कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, रैट रेस में आ गए हैं, एक स्टेटस सिंबल बन गया, सिमेज में पढ़ रहे हैं. ऐसे काम नहीं चलने वाला है. एंड लेट मी टेल यू, टीचर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, बट व्हेन दे विल guide you, they will be also angry with you if you do not come up to the mark. बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, क्लास में बातें करेंगे, तो फिर you are your worst enemy. All right, I hope I am clear. Now let me share the screen. Can you all see the screen? So I'm recapping it again. Those who did not take down notes, do it today. So report writing can be factual. Factual means based on facts, nothing imagination. कुछ अपने मन से सोच के नहीं लिख सकते आप, अपना आइडिया नहीं डाल सकते हैं आप. जो जो घटित हुआ है, जो इवेंट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड प्लान्ड. जैसे आपका इवेंट कोई प्लान हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स मीट प्लान हो सकता है, कोई आपके घर में सेरेमनी प्लान हो सकता है, कोई आपका बर्थडे प्लान हो सकता है, कोई वेबिनार प्लान हो सकता है, जैसे पाइथन का हुआ, अभी डीप लर्निंग का वर्कशॉप हो रहा है. तो दीज इवेंट्स आर प्लान्ड. I can also ask you to write a report on the workshop which you have attended. Workshop जो आपने attend किया है Python का, write a report on that. There can be many types of reports. Can be academic also.
can be based on any event which you have witnessed, which you have attended. So both the reports are based on facts, can be accidental, can be factual. So now the definition. And everybody, this homework is for everybody. Write a paragraph on report writing. And in the next class, I want each and every one of you, I can ask anybody in the classroom to make a presentation. Sometimes the teacher has to be strict. Like sometimes the doctor will have to give you a very bitter pill, or he will have to give you an injection. क्यों दिया जाता है? Why? कोई दुश्मनी तो उससे तुमको नहीं तो नहीं है कि तुमको कड़वी दवा पिला रहे हैं, तुमको इंजेक्शन दे रहे हैं. क्यों दिया जाता है? हाँ? किसी को ऑपरेशन करना पड़ता है. क्यों करते वो लोग? बताइए ना, ताकि आप स्वस्थ हो जाए. टीचर ने क्यों डांटा आप लोगों को आज? इसलिए कि ताकि फिर किसी और के क्लास में हल्ला गुल्ला नहीं करिएगा, फर्दर डांट नहीं सुनिएगा. ठीक है? So sometimes the teacher also has to scold you. So a report is a factual description. What is a report? एक वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है. वो इवेंट जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं, आपको पता है या आप पढ़ चुके हैं. You can write a report about any book which you have read. आपने कोई किताब पढ़ी है, आपने कोई फिल्म देखी है, आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई नई जगह देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस जाते हैं, and you can submit a report on the places you have visited. ठीक है? So a report can be, it is written for a clear purpose and a particular audience. तो ये क्लियर रिपोर्ट्स हमेशा लिखा जाता है किसी और के लिए. कभी कभी आप डायरी बनाते हैं और आप नोट डाउन करते हैं कि मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैंने ये किया, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट. दैट इज फॉर योर ओन पर्सनल यूज. दैट इज फॉर योर रिकॉर्ड. दैट इज डायरी राइटिंग. उसमें भी सिमिलर चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं. बट report is always written for a specific audience or general audience. हमने आपको कुछ रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक दिया है, तो दिस इज फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस. यू आर राइटिंग इट फॉर मी. Some reports can be for general. For example, write a report on bridge class. So this can be for general reading also. Like somebody would like to take admission in CIMAGE, somebody who is interested to know how are the classes held, what are the teachers like, what do they teach in bridge class. Then you can make a report to pass on for general reading. सबके लिए हो सकता है. The newspaper audience कौन है? Who is the audience of the newspaper? वो भी एक रिपोर्ट है. किसके लिए वो लिखा जाता है? All those planned or accidental reports are there in the newspaper. That is for general reading, general audience. Anybody and everybody, people who are experts, people who are students, people who are retired, people who want to learn English. So this is one reading which is open for everybody. Anybody who wants to read it as per the interest. Now there are many students in your class
who will say, I don't read newspaper? How many of you read newspaper? Please raise your hands. तुम नहीं पढ़ती हो, इसी तुम्हारा ये हाल है। तो ये एज पर द इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट है वो पढ़ते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं, आप नहीं पढ़ते हैं, आपको मतलब नहीं दुनिया से क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, नॉट इंटरेस्ट, तुम भी नहीं पढ़ते हो, क्यों? हाँ, उससे काम चल जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर एंड वाचिंग द न्यूज़ ऑन टेलीविजन? नो डिफरेंस। You can learn the spelling, you can see the structure, you will not miss any point. कोई कुछ बोल रहा है तो हो सकता है कई बात आपको कुछ समझ में नहीं आया और वो बस आया और चला गया। And when you're reading the newspaper, if you do not understand a particular word, you will underline that. You will read again and again. That will be in your hands. But on video, nothing is in your hands. If you miss one thing, you miss it all. So what is more important, reading the newspaper or watching it? Then from when will you start reading the newspaper? Huh? Yeah, ma'am. What yeah, ma'am? आज से ही स्टार्ट कर देंगे। तुम ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। गिव मी अ रिपोर्ट ऑफ व्हाट यू हैव रेड। या मैम। A report is a description of events that already has taken place, which we discussed. It is a factual account of some event or happening that may have occurred somewhere, but it is of interest to the general mass or the reader for whom it is meant. Like the newspaper. Some event happened somewhere, some accidents happened anywhere. So these reporters, they bring the report and then it is edited and published for the newspaper. This is for the general people. हाँ हाँ, जिसका आप witness है. For example, you want to go and see a historical place, some event which happened in the past, and you go and find out and you see, or you do the research. Then you will make a report about your finding. क्या क्या आपका finding है? So the report is written the way a report is written depends on two major considerations. What are they? When you start writing a report, there are two things which will come in your mind. Who is going to read it? कौन पढ़ेगा इसको? और क्यों पढ़ेंगे? Then I showed you this chart. The writer. So who is the writer? You are the writer. You observe. The writer observes. देखता है, सुनता है, समझता है. क्या समझता है? किसी इवेंट को. And then reports to किसको? Defined reader, मतलब particular experts, जिसका एक खास मकसद होता है, for a specific purpose. तो मैंने तुमको दिया रिपोर्ट राइटिंग ऑन ब्रिज क्लास, तो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. क्या पर्पस है? कि हम पढ़ के तुमको ग्रेड करेंगे, ए देंगे, बी देंगे, सी देंगे? हाँ, और ये तुम्हारा रिपोर्ट होता है
that may be published in your group, that may be published in your college magazine. अगर तुम अच्छा लिखे हो कुछ तो it may be published, it may not be published, it will not be published in the newspaper, but yes, it can be published in if you want some to publish in a magazine or an article, fine. And some reports are for general reader. Make a chart like this also, make a graph like this. So reports for specific defined reader, experts, and reports for general people who may not have any idea about. Which has no specific purpose. वो पढ़ के आपको ग्रेड नहीं करेंगे, वो पढ़ के आप बस जान लेंगे for their information. And may be published in newspaper and magazines. ऐसे reports होते हैं for general use के लिए, that is published in newspaper, that is published in magazines, because it is for general reader. Now what does the report include? What does a report include? What does it include? क्या क्या होना चाहिए उसमें? ये टेक्निकल नो हाउ, आप कोई रिपोर्ट करेंगे उसमें क्या क्या चीजें डालेंगे? What are the things necessary? So it may include the record or a sequence of events. What do you mean by sequence? This happened, then this happened, then this happened, then this happened. Sequence. Interpretation of the significance of these events or facts. The importance of these events according to your observation. आपने जो देखा, आपका नजरिया क्या है regarding these events? Evaluation of the facts or results of the research presented. उसका मूल्यांकन करना, evaluate करना. And then discussion or the outcome of the decision. Discussion. रिपोर्ट के बारे में आप डिस्कस करेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे फिर आप. And now the language focus. लैंग्वेज क्या होना चाहिए उसका? What kind of language आप यूज करेंगे? Because it is also for general use and specific use, you will have to keep your language accurate. There should be no grammatical errors. Concise का मतलब होता है to the point. बहुत elaborate नहीं करना है, बहुत ज्यादा expand नहीं करना है, to the point करना है. Clear. Whatever you're writing, it should be clear. कोई वेग बात नहीं होनी चाहिए आपके रिपोर्ट में, कोई डबल मीनिंग बात नहीं होनी चाहिए. And it should be well structured, simple sentences, short sentences. And the tense will be in the past tense. It will be in the past tense. So a report should be practical,
and convey all necessary information. आपका रिपोर्ट अधूरा नहीं होना चाहिए. It should convey all necessary information. Do not leave out anything when you are making a report. It should have a title. एक टाइटल होना चाहिए उसका, सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड स्मॉल पैराग्राफ होना चाहिए. स्मॉल पैराग्राफ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. एंड रिकमेंडेशन उसमें होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन 150 to 200 वर्ड्स. अब ये सब टेक्निकल डिटेल्स हो गया. ठीक है. What should it include, or what does a report include? You will have to elaborate all these points. Now, can anyone tell me what should a report include? क्या लिखा आपने? जो लिखा वही पढ़िए ना. Hmm? Yes. Now, this is a report. And this is the format. So what is the report about? In order to raise funds for the victims of the recent earthquake. तो recent earthquake के बाद फंड रेजिंग का प्रोग्राम था या है. Your college organized, sorry, past tense में बात कर रहे हैं. Your college has organized a cultural night in which the student performers of your college. This is the question, right? Your college and those from neighborhood schools presented a various colorful programs. Such as songs, dances, fancy dress shows, one-act plays, etc. Salim, any name you can put. Salim Merchant, a top singer of India, also made a guest appearance. You were also present as a reporter to cover the program. Write a report on 150 to 100 to 125 words. Did you understand this? Question क्या है? Did you understand the question? क्या question है? फंड रेजिंग किस चीज के लिए हो रहा है? हाँ, अर्थक्वेक के बाद विक्टिम्स के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें आप भी एज अ रिपोर्टर गए थे, एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एंड नियरिंग एरियाज के भी स्कूल एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी परफॉर्म किया है. एंड मेजर एक सिंगर है सलीम मर्चेंट, वो इस इवेंट में आए थे और आपको इसका रिपोर्ट करना है. So you were also present as a reporter to cover the program. So write a report on, this is the report. क्या कैप्शन दिया हुआ है? रीचिंग आउट, मतलब लोगों तक पहुंचना. रीचिंग आउट इज अ फ्रेज विच मीन्स जन जन तक भी बात पहुंचाना. So this is the headline.
क्या बोल रहे हैं? नो, हेडलाइन सबसे पहले आप एरो देख रहे हैं ना, हेडलाइन, बायलाइन, बायलाइन बाय सपना, बायलाइन यू कैन राइट योर नेम। हाँ, ये बायलाइन है, बिल्कुल आप लेफ्ट साइड में लिखिएगा, आप बीच में जो यहाँ पर है ना उसको लेफ्ट, यहाँ यहाँ लिखिएगा बायलाइन, नहीं बीच में नहीं। और इफ यू वांट यू कैन राइट बायलाइन इन द लेफ्ट, और बड़ौदा 20th नंबर, यहाँ पर आप पटना 20th नंबर और whatever आप लिख लीजिए, ठीक है। राइट साइड में लिखिए बायलाइन अपना नाम, एंड लेफ्ट साइड में उसी लेवल में लिखिए प्लेस का नाम एंड डेट। Patna, write the name and the month and the year. Like your name here. Your name over here. Write your name. And over here, write the date. Right side, write the date. What is the date? And what date? Whatever. अरे कोई इमेजिनरी नेम लिखो ना, नवंबर ही लिखते हैं ना, जो लिखा हुआ उसमें लिखते हैं भाई। This will be in the right side. ठीक है, समझ आएगा ना? Your name in the left, right and the date on the date. Yeah. बायलाइन, बायलाइन का मतलब होता है, पहले तो टेक्निकल टर्म समझिए। हेडलाइन मतलब टॉपिक, बायलाइन मतलब किसने लिखा हुआ है, डेट लाइन मतलब द डेट, एंड डिटेल्स, डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। सामने आ गया ना, 5 W's and 1 H। All right, no talking. We are going to continue this in the next class. And अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है बताएंगे ना? I'll tell you. You will see that in whatever you're writing, they always 5 W and 1 H. वो आना ही आना है, ये पहले मैं पहले ही बता चुका, हम आपको बता चुके हैं। या आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, या पैसेज लिख रहे हैं, या स्पीच दे रहे हैं, या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, या रिपोर्ट लिख रहे हैं, ये 5 W's and 1 H करना आ जाता है आपको, then you can almost write almost anything. All right, that's it for today.